स्टार्ट हो गया। तो अभी यूरोस का राउंड ऑफ 16 स्टार्ट हो रहा है आज से। तो लेट्स डिस्कस मैचेस। हम लोग वेल्स डेनमार्क डिस्कस करेंगे, बेल्जियम पोर्चुगल डिस्कस करेंगे, क्रोएशिया स्पेन करेंगे, फ्रांस स्विट्जरलैंड करेंगे और इंग्लैंड जर्मनी करेंगे। कूल। तेरे को ऐड करना है कुछ? Yes. We have Sweden, Ukraine too, but I think Sweden will just edge past Ukraine. यार For me, देखो, they are the मेरी favorites. ओपिनियन से स्वीडन आराम से पहुंच जाएगी। हमको मेरे ज्यादा को भी लग रहा दिमाग है. नहीं खर्च करने की जरूरत है उस पर। And I want Sweden to go through. I love their one player, Alexander Isaac. हाँ, अच्छा player है. पर There यार are talks स्वीडन की about him एक चीज है, for future. सरप्राइज एलिमेंट काफी रहते, सरप्राइज काफी कर सकती है। मतलब I mean, यूक्रेन, we आई have seen गेस that they यूक्रेन can. थोड़ा सरप्राइज कर सकती है, जैसे लास्ट मैच भी अच्छा खेला था। No, no, no. Last match they were very lethargic. Yeah. Last match was against I think which team? Ukraine lost that or lost that against which team? Am I ये था इससे forgetting? पहले वाला था, यूक्रेन एक मैच बहुत अच्छा खेली थी जिसमें 2-2 था। Their last, I think Austria. Yes, Austria versus Ukraine. ओके। Austria won by just one goal. They won. And Ukraine never looked direct in their passing, just sideways, and never looked. They had a purpose that they want to do something with it. So for me, after seeing that, I will give Sweden a pass. That yeah, they will go through, and because of the performances of that, and they've topped the group. Spain in the group and Sweden is top in the group. That counts for something. डेफिनेटली, But बट let's see. The most enticing fixture is Germany versus England. Is it जर्मनी, coming home? आई गेस जर्मनी विल नॉक इंग्लैंड आउट I आराम also से। think with the but द- but but again, Germans have to sort their defense out. They get hit on the break, and they have to be pacey. So if you look at Kroos and Gundogan, they cannot screen. They are not protectors of the ball. Okay. Whereas when we see Kante, when we see Calvin Phillips, okay, they can screen, they can protect. Declan Rice, they can protect. Okay. But Cruz is a very good player, and he's wonderful on the ball. He can supply, he can even dribble past, shoot, but he cannot protect the defense. Same with Gundogan, very intelligent box to box player, can create spaces, can play between the lines, but again cannot screen and protect. So that is where Germany lacks in that mid. When they get hit on the break, they don't have enough numbers falling back, and they're often outnumbered, and then hence it leads to goal, as we saw in the Hungary match. I mean, that first goal, frustrating था वो भाई. पर यार मुझे लगता है हाँ. फॉर्मेशन क्या रखेगा, तुझे क्या लगता है जर्मनी? देखो मेरे हिसाब से वही they will play 3-4-3. 3-4-3। Cruz, Gundogan, Kimmich, Gosens, full back, wide full back, ठीक है. Wing back, sorry. तीन पीछे गिंटर, Rudiger, Hummels, Neuer तो अपना होगा ही होगा. Of course, you cannot deny him. Then we have Kai Havertz. I would certainly play Kai Havertz, just because of Chelsea. I'm not biased. Okay. नहीं नहीं, मैं तो 50 मिनट के बाद ही सब्स्टिट्यूट करूंगा उसको। 50 भाई, 60-70 तो खिलाओ. He's young lad. नहीं Young करे, blood. Okay. बन रहा है ना बड़ा प्लेयर, बने 50 करे 30 मिनट में गोल, तब आएगा मजा। So, and I would definitely put Müller because of his runs and because of the experience that he gives. The third player is I was not impressed by Sane's performance. He looked very किमिच को तो shaky. डालेगा। Kimmich is there, na wing back. I'm talking about the front three. अच्छा Kai अच्छा, Havertz ठीक हो है। गया, Müller हो गया. What do you think? तीसरा कौन सा होना चाहिए? मेरे हमेल्स। को तो मतलब समझ में नहीं आ रहा. अरे मैं पहले की बात करो. हमस हो गए, बैक थ्री अच्छा हो गया, फोर बीच में हो गया. गॉसेंस, किमिक, गुंडोगन, क्रूज, पीछे अपना रूडिगर, ठीक है। हमस और हावर्ट्स, गिंटर. हाँ. गनाब्री को फ्रंट थ्री में काउंट फर्स्ट किया ऑर्डर. तूने, गनाब्री को? नैब्री की परफॉर्मेंस आई डिड नॉट इवन लाइक, बट हाँ, वी यार डिड देख, नॉट हैव अ चॉइस. वी गनाब्री हैव टू. इंग्लैंड के अगेंस्ट तो खेलेगा ही ना, क्योंकि अब ही लव्स वेम्बले. स्टेडियम के हिसाब से खिला ले। ही लव्स वेम्बले.
स्टेडियम के हिसाब से खिला ले, मेरे को hoping तो for लगता him है to score. खेलना चाहिए. I want a Kai Havertz and Serge Gnabry show. I भाई just want देख, that. आई फील हावर्ड्स बहुत मतलब इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी हावर्ड से हगेगा. मेरे को नहीं लगता आगेगा because if we like even against France, यार you देखो know, अभी 2 मैच में जर्मनी के हावर्ड्स रहा है, तो इट्स नॉट लाइक जर्मनी के पास प्लेयर्स नहीं है या और कोई परफॉर्म नहीं oh they करेगा. have, yeah. But तो but uh, but the manager will not pick up anyone ahead of Havertz. I don't think so. He's not going to pick up Werner. Okay, we know that. अटैकिंग मेंटालिटी तो रही है जर्मनी की, तो आई डोंट थिंक सो कि हावर्ड्स के आगे कोई चूज करेगा. Exactly. There's this one kid, Musiala, if I'm pronouncing his name हाँ. right. He is also wonderful. He's very talented. He's from, I think, Bayern Munich. Yes, he's from Bayern Munich. He came on against Hungary, and whatever I saw of him, few glimpses, he was fantastic. He showed something. But of course, you cannot start him. Maybe start him. I don't know. I would not start him because I would certainly go with the front three that has been usual front three: Müller, Gnabry, and Kai Havertz. And let's hope they score. But yeah, England, talking about England, they have been shy in front of goal. In front of the देखो goal. इंग्लैंड ने चांसेस क्रिएट ही करे अभी तक, 1 या 2 गोल करे शायद इंग्लैंड ने. दे हैव स्कोर्ड जस्ट once or twice, और इवन केन ने भी नहीं किया ना. केन को तो लास्ट मैच में चांस मिला है to get his first shot on the target. हाँ. And you know what? The positive for England here is Harry Maguire is back, and Harry Maguire actually is playing some direct passes to Harry Kane. We saw that where Harry Kane just got the pass. He tried to cut back inside, and he took a shot. The keeper, of course, saved it. Good save. But yeah, we can see some positives in there. Mount का पता नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा. क्यों यार, Shaw माउंट का हाँ लग सकता है. Again वो scene है ना, because out due to isolation, came in contact with Billy Gilmore. So yeah. यार वो जर्मनी का मैच दूर है यार अभी. Germany England is far. There are speculation because it also depends on if he trains with the team. If he doesn't train with the team, then has he earned the right to play? Because Saka also performed wonderfully. I'm not saying that. Of course, there are different positions. Saka changed the game, I guess, last time. Yeah, Saka made some direct runs, had purpose in his strides, showed some intensity, showed some character. Yeah, we want to win. What are your thoughts on Sterling? Underrated, overrated? खिलाना है नहीं खिलाना है? Yeah, Sterling के लिए I am very dicey. I mean, yeah, he is the only player who has scored for them. Scored has come through Sterling. He does make some good runs, but when we talk about other players, there are good players in England, in this England side, in this English side. Namely Jadon Sancho. I mean, I don't understand why he's not playing. I mean, much of the approach that is there from the fans and from a lot of people is why Jadon Sancho is not playing. Jack Grealish should start. He's a very direct player. Grealish last time with Xhaka, I think so was like excellent. अच्छा था, काफी he produced. Harry Kane has to start. Of course, you do not have an alternative. Marcus Rashford from the impact player from the bench can be there. I think so Foden should be there in first 11. So if you pick a Foden, then Saka has to be benched. Saka will be. Yeah, substitute में कर लो या but he should be somewhere, I guess. He should be, and again, England plays with 2 holding midfielders, Calvin Phillips and Declan Rice. You can maybe change that. I don't know. Maybe play Mount there, but he can. Mount जैसे नहीं खेल रहा तो तेरे को क्या लगता है कौन replace कर सकता? They will play with similar style. I think the only change will be Phil Foden instead of Bukayo Saka. I think so.
But Zaka last match बहुत अच्छा खेला है, तो I don't think so. He got man of the match, man. Southgate will be like कि नहीं हटाएगा, ऐसा नहीं करेगा, I guess. So will you bench Grealish? I mean, I would substitute him, na. I would substitute him in the second half. I would take that risk because I know Grealish has that power, that control, and everything that he can pull it off. I feel उसको पूरे 90 मिनट नहीं खिलाऊंगा मैं ग्रीलिश को, क्योंकि सामने वाली ऑपोजिशन को भी ये लगना चाहिए ना कि एकदम से कोई आया है, and Grealish has been that player, even for Aston Villa, of course, for them as well. He has been instrumental. For them, he's been a star, and he's a star, and we can see that clearly how Manchester City is behind him. So that is even जब वो लिवरपूल को 7-2 हराया था, it was Grealish who was the star. Grealish, yeah. I think Oli Watkins got his hat-trick that day. Yeah, Oli Watkins got it. But of course, could not make up for the England squad because of their immense depth, and still Professor Southgate has to play. I mean, Southgate is something else. Southgate has surpassed Luis Enrique in his decisions, and Enrique is not playing Ramos biscuits and all. I don't get that. I mean, I actually want Croatia to win against Spain. But yeah, I mean, considering the last match performance, I think so that Spain will win. Spain will win because see, it's 2000. It has been since 2008, 2010, 2012. It's long time that Spain comes through, and in the last match they showed that they have that power. They have that thing, and like 1,000 passes ke baad bhi now they scored 5 in a match. Maybe against a small team, maybe a small team like Slovakia, but they showed that they can actually score well. तो आई थिंक सो स्पेन एंड मोराटा का जो जितना क्रिटिसिज्म है, आई थिंक सो ज्यादा है, इतना नहीं करना चाहिए, पेनल्टी मिस होती है यार, देखो है वो थोड़ा, पर ठीक है. I mean, I don't know. Morata is completely, he's like situation which Warner was facing, but Warner had so many games to prove. Yeah. There, Morata won't get that chance because it's like there are not many games that are played in the tournament. Okay, it's not. Yeah, but जुए के लिए बहुत अच्छा खेलता है Morata normally. Yeah, he did. It's just that national duty और ये सब में वो थोड़ा सा I guess उसको support भी तो नहीं मिल रहा यार, उतना नहीं मिल रहा जितना सोच रहे हैं. I mean, Spain has to be more direct again. Of course, they scored 5 goals, and they showed that directness. Honestly, they showed. What do you think? Who will start for England as a right back against Germany? Who will start? What do you think? Kyle Walker or Reece James? Huh? Okay, Trippier. Kyle Walker, Trippier or Reece James? Kyle Walker. Kyle Walker. क्योंकि उसको इतना अभी उसको इतना टेस्ट भी नहीं किया है यार, तुमको क्या लगता है? Defense, see, I mean, Kyle Walker is a very good player, amazing player. He's wonderful going forward, but sometimes I feel he can commit those errors in defense, and because of his pace, because Spain को इस वक्त stagnate हो गई है स्पेन, उसको एक ऐसा बंदा चाहिए काई वॉकर की जगह जो ब्रेक कर सके, जैसे जो स्पेन के साथ दिक्कत थी, दैट मार्क्ड है सारे मैन, कोई तोड़ नहीं पाता, मतलब इवन स्पेन हो या इंग्लैंड हो, दे फील लाइक कि ऐसे बिल्कुल मिरर मार्क्ड है, कोई प्लेयर ज्यादा मूव नहीं कर पाता, इसलिए तो गोल्स नहीं कर पाते. अभी स्पेन के साथ भी यही था, काफी मार्क्ड फील कर रहे थे सारे प्लेयर्स. Who played for them as a right back against Slovakia? I think Azpilicueta played, right? And before that, who was playing as a right back for Spain? I guess
स्पेन के लिए डोंट मेरे को भी रिमेम्बर। याद नहीं आ रहा उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तेरा व्हाट इज योर स्टैंड ऑन फरहान टोरेस? He's a good player. For me, he's an amazing player. I don't understand why he does not start. I mean, even for, I mean, of course, Manchester City, there are so many players, but I think he should start. For me, he should start. I rate him highly. भाई 6-0 हराया था जब जर्मनी को यूएफए नेशनल पे, तब हैट्रिक मारी थी टोरेस ने, और तब से उसके बाद उसको बहुत ही कम चांसेस मिले हैं, इवन क्लब पे भी और वैसे भी। Exactly. हाँ, I think Morata also got 2 goals or 1 goal. अरे यही सारे प्लेयर्स थे। इवन आई गेस दैट मैच फैटी टू प्लेड, अंसु फाटी प्लेड दैट मैच आई गेस, इफ आई रिमेम्बर। तो हाँ, उसके बाद इंजर हो गया था शायद। I think Pau Torres also played. हाँ, Villarreal wala. He also played, I think. And there were some players that played that game and are not even in the are not even selected. I don't get that. Jose Gaya, is he selected? I don't think so, right? नहीं यार, Even he जोसे is not. गाया को तो बार्सिलोना पोच के नहीं कोशिश कर रहा है, बट ही इज लाइक नहीं, मैं वेलेंसिया में रहूंगा 2 साल और, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। He's also very good defender. अगर जोसे गाया आ जाए तो बार्सिलोना सुधर जाए। खैर बार्सिलोना के लिए तो कोई भी प्लेयर आ जाए वो सुधर जाएगी। इट्स लाइक they need defensive reinforcement. कब तक पीके रहेगा यार? पीके तो पीके हैज, अब मैं मतलब बार्सिलोना का हूं तब भी मैं बोलता हूं, पीके इज नॉट डूइंग जस्टिस टू हिज रोल नाउ। He's not. It's just that he is our most prized player right now, because पूरा स्क्वाड चला गया मेसी के बाद, तो पीके ही आता है। अगर तुम देखो पुराने स्क्वाड में हमारे 2011, 2012, 2017 तक के, जब तक हम मतलब इवन चलो बायन से पहले, बायन 82 के पहले जो स्टार प्लेयर्स थे उसमें पीके और ये सब थे। तो और 82 के बाद तो बिखर गई यार बार्सिलोना, अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। मतलब वी केम आई गेस थर्ड इन ला लीगा, राइट? तो मैड्रिड के नीचे आए हम, पर मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था सीरियसली। मैं तो अपने आप को मैड्रिड से कंपेयर ही नहीं करता इस वक्त। आई कंपेयर बार्सिलोना टू सिविया, बिकॉज मैड्रिड की बी टीम खेली और बार्सिलोना के पास तो बी टीम ही है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन टू क्लब्स। Exactly. But even Real Madrid is going through a lot of changes, through a lot of ups and downs, and I think अभी कुछ समय तक तो these two teams will not be able to attract players. I don't know. Maybe they will not. But I mean, seeing what Manchester City is doing, and maybe what Bayern is going to do, and PSG is doing, I think they will get Hakimi. I'm sure they will. Hakimi यार, I don't think so ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। See, Chelsea is also after Hakimi. मुझे लगा चेल्सी ले जाएगी। चेल्सी यार, अभी तो तुम चैंपियंस हो गए, तो तुम्हारा तो थोड़ा सा तो वेटेज बढ़ाना ही पड़ेगा ना। मतलब स्क्रीमिंग चैंपियंस ये वो, ठीक है, अनोइंग है बट ठीक है, चैंपियन तो चैंपियन है यार, ठीक है। हम लोग से पूछो यार, 2015 के बाद ट्रेवल देखा नहीं। 2015 के बाद कोई ट्रॉफी आई गेस ला लीगा 2 बार जीते होंगे हम, उसके अलावा कुछ नहीं जीते हैं। But you won a trophy this season, ना? अरे कारबाओ कप यार, कैस्ट्रोल का डब्बा लगता है यार। You won Copa del Rey this season, ना? नहीं, हाँ कोपा जीते यार, बट कोपा अमेरिका इज
अलग लेवल का हिट करेगा, क्योंकि देखो यूरो मतलब सॉरी वर्ल्ड कप जीतने की तो अभी पता नहीं है, बात नहीं है अर्जेंटीना तो यार। अर्जेंटीना देखो, आई एम गेटिंग बैक टू ऑप्टिमिस्टिक दैट अर्जेंटीना, देखो अभी कोपा की बात करें तो अर्जेंटीना, यूरुग्वे, ब्राजील, दीज आर द थ्री टीम्स व्हिच विल मेक डिफरेंस इन कोपा। जो सरप्राइज करेगी वो चिले करेगी, जैसे 2015-16 सब में दिमाग खराब कर रहा है अर्जेंटीना का, तो चिले करेगी। तो यही चार टीम है, और मुझे लगता है अर्जेंटीना पे प्रेशर ज्यादा है, और यूरुग्वे बहुत साइलेंट किलर की तरह फाइनल में जाएगी। आई डोंट थिंक सो ब्राजील जाएगी। ब्राजील वो उस लेवल का, मतलब ठीक है अच्छा खेल रही है, बट वैसा नहीं खेल रही कि जितना प्रॉमिसिंग या ड्राइविंग लगे। खैर, अब हम लोग थोड़ा सा स्पेन क्रोएशिया डिस्कस कर लेते हैं। exactly getting back to Euros. हाँ क्या लगता है? I mean, what do you think? What यार, will be आई the थिंक score सो कि and what do you मुझे predict? Who will लगता है go through? लॉरेंटे विल मेक अ डिफरेंस टू स्पेन, Hmm. एंड इवन Alba, Lorente, they will, Jordi Alba तो has been हाँ। done. एंड इवन आई फील कि अगर जैसे पेड्री को अच्छा चांस दिया जाए तो पेड्री कैन बी फ्रूटफुल टू स्पेन। हाँ, Pedri is playing right, but हाँ बट Pedri is यार playing. उसको तो मतलब चांस एज एन उसको बॉल टाइम इवन चीजें नहीं मिल रही Yeah, हैं, उस जिस पोजीशन में I खेल रहे हैं mean, उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। I think he played a very good pass for Jordi Alba in the last match, हम्म and Mikel from हम्म that Real Sociedad player, he wasn't हम्म able to finish it. I हम्म think it was some. I think it was him or maybe someone else. But I mean, it was a wonderful ball played by Pedri. I mean, if he gets into those positions, he can make a हम्म। difference. I हाँ agree. वही I मतलब, agree. बट उतने चांस नहीं दे रहे हो जिस हिसाब से पेड्री या बार्सिलोना के लिए जितना बड़ा चीज हो गया है। मतलब इफ इफ वी में से अगर कोई प्लेयर है जो खेलेगा मेसी के बाद आगे, So, of course. पेड्री है। But do you think Gerard Moreno starts for Spain or not? Does he deserve, or should he not? नो, आई डोंट थिंक सो। Gerard Moreno, no. नो What will be your like? What will be your starting 11? भाई, मेरे को तो वही What will चाहिए you जो think? मेरे को उसके अगेंस्ट दिखा था, पोलैंड के अगेंस्ट। But they were not very efficient against Poland. या बट देखो स्पेन हैज ऑलवेज बीन दैट टीम कि वो एक गोल करे और पासिंग वासिंग करे। मतलब 2010 में भी इट हैज ऑलवेज बीन दैट स्पेन पूरे टाइम पास करती है, एक गोल करती है, और वो एक गोल उसका होता था। तो ये स्पेन हैज नेवर बीन दैट टीम जो बंडल में स्कोर करे। बट हमें एक ऐसा चाहिए जो मतलब पासिंग भी करे। और ठीक है, स्पेन की हमेशा अभी पिछले 7-8 साल से स्पेन का ऐसा हो गया है कि स्पेन स्टैग बिल्कुल उसको मूवमेंट नहीं मिला। जब फैटी आया एकदम से तो सबको लगा कि यार स्पेन के अटैक में मूवमेंट है। और अभी जैसे फैटी चला गया तो अभी वापस से वैसा हो गया, पासिंग 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 पासिंग, एंड अगर कोई चांस मिला तो काउंटर्स पे स्कोर। स्पेन पहले पहले अटैक करता ही नहीं है। ये वो तो है. लुइस एनरिक्स की स्टाइल है। बार्सिलोना में था तब भी यही करवाता था, स्पेन में है तब भी यही करवाता। I mean, there are a lot of passes before the goal. They're not very direct again. But हम्म वो भी नहीं है कि मतलब इंग्लैंड की तरह हम्म they are not very, हम्म you know, they play from the back, no doubt हम्म about that. But हम्म England is just England is way too boring. हम्म And we saw something different with Spain against Slovakia, and I hope they produce a performance. But I don't hope for their win, of course, for obvious reasons. But I mean, yeah, Spain can do it. They have the potential, they have the players, and they have some good, intelligent footballers as well who can do it. Of course, we are missing Sergio Busquets. I don't know whether he'll start or not. Of course, Ramos not selected. He would have made a difference because यार again, अगर वो Ramos, you get पेनल्टीज leadership. रामोस ले लेता तो स्पेन का गेम ही अलग होता, और लीडरशिप की तो बात अलग ही है। And he's a clutch player. He knows when there's a lot of online
he will produce Bro, for you. He will उसने give एक एक performances. गोल एक एक पेनल्टी करके रियल मैड्रिड को 2019 में बार्सिलोना के ऊपर करके चैंपियंस बना दिया, when we had to win like 5 or 6 and these guys had to win 10 and they won 10 and became champions in 2019. Zidane, yeah, Zidane was nice. Zidane. Before that, I think Jose Mourinho won the league for Real Madrid. कब? Yeah. अरे पहले नहीं, अभी ये 2019 तो जिडान ही था ना भाई. Zidane. No, before that it was 2018 तो हम जीते ना शायद. 2018 हम जीते हैं बार्सिलोना. 2016 ये लोग जीते हैं. And with Ancelotti, they have never won La Liga. I don't think so. क्या? हाँ, they have not. With Ancelotti, हाँ. Real Madrid नहीं never won नहीं La Liga. नहीं. अच्छा, अब मेरे को ये बता, what do you think about Belgium? बड़ा गेम, Belgium versus Portugal. Portugal. See, I think Belgium with Kevin De Bruyne back in the squad, I think he's going to supply those passes. He's going to play those passes, and it will be a very good watch. Lukaku versus Ruben Diaz. That is going to be something. That looks promising. Something to watch. That looks exciting. That we'll have a battle to watch on the field. And I think with Kevin De Bruyne, if Eden Hazard starts, of course his brother is also very good. Carrasco again is a very he's a very top he's a top player. Takes on defenders, is not scared of taking them on. Can make direct runs, can put those crosses for Lukaku to just get on the score sheet. I think, and I would like to say that Belgium will have enough to. What is your stand on Tielemans? Tielemans. Tielemans. Yuri Tielemans, Leicester City. He's a good player. He is a good player, but I don't think so. He starts ahead of Axel Witsel. I don't think so. Against Portugal, maybe due to experience and maybe again Witsel is a very good player. He's a protector of the ball. Again, with Yuri Tielemans, he is also protector of the ball and he is also good going forward. It's a tough choice. I would pick Axel Witsel. But it looks like for me, that Belgium will have enough against Portugal. Portugal might again score a goal through penalty. Sorry, Portugal has been the luckiest team of the century. Like Euros ले लो, World Cup ले लो, या अभी ले लो. Like against Hungary, they were struggling and suddenly एक उधर का VAR decision flip हुआ and the game changed. 88th minute and Ronaldo is like, whoa. Hungary scored, but their goal was overturned due to VAR. That goal. Hungary has performed well against all these three big teams. The group of death became too tough for three mavericks like France, Germany. Yes. I mean, Portugal and France, world champions, played a draw against Hungary. France, world champions, drew. Portugal, Euro champions, struggled. And this. And former world champions, Germany. I felt Germany match like Germany didn't accelerate at all. It was like just like France wala match, last wala. France was like whatever, यार चलो chill है. Mbappe और ये सब कुछ पढ़ा ही नहीं आगे. Do you think Mbappe has played well in this group stage? No, not at all. अभी तो उसको कितना टच ही में, मतलब यार अभी तक वो अगर वर्ल्ड कप वाला एम्बापे होता करीब 12-13 अटेम्प्ट तो ऑन टारगेट मार ही देता. रिमेंबर 4-3 हराया था उसने अर्जेंटीना को. हैट्रिक ना. फक, इमेजिन भी नहीं करता. 18-19 साल का लौंडा. हाँ, Pavard also scored, right? Yeah. And मेसी को बाहर करना 18 साल के लौंडे के लिए, 18-19 साल के लौंडे के लिए बड़ी बात है. Exactly.
I mean, what do you think? Who will go through, Portugal or Belgium? Bhai, definitely it will be Belgium, not Portugal. If So, only if that Portugal has been the luckiest team, even though Belgium 2-1 lead कर रही होगी and एक आएगा कुछ ऐसा कि पेनल्टी मिलेगी पोर्चुगल को. can we see a surprise from Bruno Fernandes? Will he start the game or will No, he no, a player no. from the bench? खेलेगा तो 50 Impact के player, बाद ही impact खेलेगा. sub. 50 के बाद खेलेगा, He will 70 not में start. खेलेगा. You won't start Bruno if you're the No, manager. no, 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 no. अरे रोनाल्डो है यार पेनल्टी लेने के लिए, क्यों चाहिए ब्रूनो? I think Jota starts, Silva starts, हाँ. Ronaldo starts, Danilo starts, Renato Sanchez starts. Who's the other player for Portugal in that three? They play 4-3-3, I think. तो मुझे लगता है जैसे क्या कह रहे थे, देखो सिल्वा होना चाहिए. अगर फर्नांडिस तो नहीं है. करेगा क्या स्टार्ट उसको? मुझे नहीं लगता, मतलब करवालो को ले, जोटा रहेगा ऑफ कोर्स. हाँ, जोटा तो विल बी देयर. हाँ. आई एम टॉकिंग अबाउट वो मिड उनका. बट रेनाटो सैंचेज विल बी देयर. हाँ. और कौन रहेगा? कार्वालो. करवा लो यार मैन, क्योंकि अब जब 2-4 था याद है जर्मनी के अगेंस्ट, तब करवालो ने स्टार्ट किया था, तो करवालो वाज गुड, इफेक्टिव. करना चाहिए यार. और एक और चीज, व्हाई जाओ फीलिक्स, वेयर इज ही? पता नहीं, एंड मुझे दैट सब्स्टिट्यूट में भी नहीं दिखा था. And that guy Sergio Oliveira, that photo, who was actually instrumental in knocking out Juventus, the old lady, they knocked them out because of Sergio Oliveira. What a top class player he is. I mean, he should at least get a chance to be subbed on. I don't think so he's even played a second. वो है क्या? I think है वो squad में. I don't think so वो है squad में. I mean, top player है वो भी. He's a very good player. I mean, of what we saw in the Champions League. मुझे तो यार नेल्सन सेमेडो का रोल बहुत सही लगता है. सेमेडो has been, but I mean, he's been shaky too. He's been very shaky. मैं इसलिए नहीं कह रहा बार्सिलोना और उस सबका, बट सेमेडो has been, he has played better in the squad यार. I mean, he was very confident of defeating Germany. We all know what happened. Again, हाँ ठीक है. अभी इटली ऑस्ट्रिया की बात करते हैं. What do you think? Of course, Italy will win. But do you want to go with any scoreline? Italy 2-0. Italy यार 3-0. Austria, I don't think so. 3-0. 3-0. भाई Italy has not conceded. And they scored, I think 7 goals. Yeah, man. Italy is like the dark horse. Like it will. अगर इटली आगे बढ़ती है तो इटली धो देगी, मतलब whoever plays Italy next. I am not expecting Austria to score against Italy. Austria will. I don't think so even. I think so. Even Austria understands कि इसके आगे यार अभी इटली के आगे ड्रॉ है तो नहीं हो पाएगा, unless कुछ ऐसा हो जाए कि अरे ये तो सोचा ही नहीं. What happened? But हाँ, David Alaba की process पर और क्या? Austria. But I think it will be a breeze. It will be a breeze for Italy. They will just get past. They will win this game. They will go through, and I see Italy going far in this tournament. I see. I mean, Italy, I think so. Quarter तो मतलब quarter के बाद let's see, but I mean, or again,
डेनमार्क वेल्स का क्या लगता है? Who will win? डेनमार्क वेल्स। वेल्स भाई, वेल्स। बेल है यार, वेल्स। डेनमार्क यार देखो, वेल्स व्हाटएवर द इमोशनल यार फैक्टर, व्हाटएवर इट इज कि लास्ट मैच में अच्छा खेले 4-1 ये वो, बट नो, वेल्स यार भाई, वेल्स। तू बता, कुछ भी हो तेरा सकता है हार्ट कह रहा होगा डेनमार्क, बट वेल्स भाई। but you know I'm actually very confident about Denmark as well, considering that see it can be a one-off या देखो, performance at अगर Denmark. कोई भी एक टीम के लिए यूरोस एकदम रोलर कोस्टर रहा है, वो डेनमार्क रहा है, विद स्टार्टिंग डे Yeah, एंड एवरीथिंग, एंड बिल्कुल लास्ट थे, एंड कहाँ थर्ड प्लेस truly पे है खत्म किया। मतलब काफी आई थिंक ज्यादा सो। हद तक यार, but again देखें क्या होता है. I mean I would want Denmark to win, and but yeah Wales is no no मतलब इवन cookies like इटली वाज there's लाइक स्ट्रगलिंग अगेंस्ट वेल्स, kind दो of वन yeah nil, I mean बट Italy हाँ इटली हाँ बोलो. स्ट्रगल कर रही थी यार, इतना अच्छा नहीं खेल रही थी इटली। हाँ actually मतलब they could, I mean no they had chances and they didn't produce. They didn't convert their chances Yeah, as well. and They had I they mean, made I chances. mean, Wales is much stronger with Daniel James in the picture, yeah. Daniel James and his pace, it's menacing. His pace is something, man. अभी देखो, औकात नहीं है उसकी कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए स्टार्ट करे, बट स्टिल ही हैज दैट थिंग। Surprisingly, Ole starts him for some games. I mean, Ole would start him against Chelsea बट because he इतनी needs. इतनी औकात नहीं है यार, बहुत बहुत है हमारे पास, बहुत है, ग्रीनवुड सब है, अभी जेम्स की जरूरत नहीं है यूनाइटेड को। वो तो है. बट हाँ, यहाँ कह लो, यहाँ यहाँ गरीबी है वेल्स में, तो यहाँ स्टार्ट करने का बनता है उसको। वेल्स, राम से बेल, मेरे तो पहले तीन के यही हैं। And there's this one forward, Moore. How do you pronounce his name? He's also a tough number, tough center forward. Traditional center forward है वो काफी. He might score as well. I don't know. सब्स्टिट्यूट हुआ था आई Even गेस Bale, इसके अगेंस्ट, I think. इटली के अगेंस्ट सब्स्टिट्यूट में आया था। And you know, it's not like Wales did not have chances. Wales could have scored through Bale, but भाई देखो, he didn't make most of it. बेल हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट ट्रोल्ड टीम एवर ड्यू टू बेल, कि हाँ बेल है यार, क्या ही करेगा ये वो, बट जो लेवल पे बेल लेके जाता है उसको, आई डोंट नो, मैं शायद गलत याद कर रहा हूँ, पोर्चुगल वर्सेस वेल्स था, एंड बेल ने अच्छा खेला था आई गेस। But they lost, I think. दे लॉस्ट, ऑफ कोर्स पोर्चुगल आगे बढ़ी थी, बट एक वो how many goals? How many goals with they lost? How many goals did आई Portugal डोंट score? रिमेम्बर यार, बट अच्छा खेली थी। But हाँ, Italy, Austria हो गया अपना, Spain, Croatia भी we have spoken, we've covered that. Germany, England we've covered. Denmark, Wales of course हो गया, Italy, Austria हो गया. Sweden, Ukraine भी covered of course. France, Switzerland. France, of course France. Come on. यार शकीरो को कुछ तो चांस तो दो यार, गौरव ऐसे क्या करते हो तुम? फ्रांस का मुझे लगता है स्विट्जरलैंड ओवररेटेड है फ्रांस। I think France will win by 3-1. मुझे लगता है शकीरी विल सरप्राइज। So you're going for Switzerland? You're going for Swiss chocolate? I'm going for 2-1 Switzerland. Going for Switzerland? 2-1. Because मैंने देख लिया फ्रांस को, देख लिया अभी तक लीग मैचेस कुछ नहीं उखाड़ पाई है, बहुत प्लेन खेली है, बहुत प्लेन खेली है, कोई स्पिरिट नहीं दिख रहा। ग्रीजमैन हो या एम्बापे हो, कुछ नहीं कर रहे। तो तुम बता दो कोई स्टैंड आउट प्लेयर अभी फ्रांस का। मैंने जैसे स्विट्जरलैंड का शकीरी बताया, तुम बताओ। Without any doubt, Pogba.
Pogba has been good. You can't deny that. But Pogba has been good. But remember Shaqiri ka last match? Is Pavard injured? I guess Pavard injured. Because I mean he was phenomenal against Germany, and he's been good for France in that right back position. But I guess injured. I don't remember, but शायद injured है. Funny. तभी नहीं खिलाएगा. I mean, why would he not play Pavard and play Koundé against Portugal? That was, and Koundé is, I think he's a centre back for Sevilla. He's not even a right back. Maybe he's played few games, I don't know. But yeah, I think I'm going for France win. You're going for Lindt chocolate win, but we'll see that. Bhai, I think so. It will be Shaqiri's night and France कहीं stand मतलब यार इतनी favorite है ना France तो कुछ तो होगा इतना सीधे सीधे draws नहीं होंगे. एक अपसेट बनता है और एक अपसेट यही होगा. हो तो सकता है. I mean, again, yeah, Switzerland can surprise, but I mean, first I am feeling, and that gut feeling is there. France will just edge past. France will be able to win. Will have enough to. France तुझे क्या लगता है कहां तक जाएगी? If France wins this, I think they're facing Italy, right? I guess. No, they're facing Belgium. France, Belgium? नहीं. Belgium. I think. रुको एक बार चेक करना पड़ेगा. एक बार just check if you have. नहीं, check it. रुको. हाँ, check करो एक बार. Because then only we can pick. I can give you an answer. Yeah. Playoffs. इस पर दिखा नहीं रहा. अभी तो इसका ड्रॉस पे दिखा रहा है कोई वो चार्ट नहीं दिखा रहा. रुको शायद मेरे पास है. रुको. हाँ, राउंड ऑफ 16 तो ये हुआ. क्वार्टर फाइनल देख. पहला क्वार्टर फाइनल होगा फ्रांस स्विट्जरलैंड या क्रोएशिया स्पेन. ठीक, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ. फ्रांस स्विट्जरलैंड राउंड ऑफ 16 दैट विल बी राउंड. हाँ नहीं, क्वार्टर फाइनल का बता रहा हूँ. अभी तो राउंड ऑफ 16 का हो गया ना. तो मैं ऐसे बता रहा हूँ फ्रांस स्विट्जरलैंड में से और क्रोएशिया स्पेन में से मतलब खेलेगा कोई. हाँ, फ्रांस एंड स्पेन. वही कह रहा हूँ. फ्रांस स्पेन. अगर स्पेन यार देखो क्रोएशिया ने सबको हरा के रखा हुआ है. मॉड्रिच है, रैकिटिच है, ये सब है. बट स्पेन अगर वहां से निकल जाती है तो फ्रांस तो वैसे भी मैं कह रहा हूँ इधर नहीं पहुंच रही. तो स्पेन स्वीडन होगा. स्पेन स्वीडन सॉरी. हाँ, स्पेन स्वीडन. बट देखते हैं. दूसरा है बेल्जियम पोर्चुगल में से और इटली ऑस्ट्रिया. तो इधर मैं तो हम लोग दोनों ही कह रहे हैं कि बेल्जियम इधर से आएगी. बेल्जियम ना. इटली. हाँ, बेल्जियम वर्सेस इटली विल बी योर क्वार्टर फाइनल्स. I would go for Italy. I would go for Belgium. ठीक है. फिर तीसरा चेक रिपब्लिक नीदरलैंड में से और वेल्स डेनमार्क. तो मैं इधर तो कह रहा हूँ वेल्स जीतेगी और उधर नीदरलैंड कह रहा हूँ. नीदरलैंड वर्सेस वेल्स. So Netherlands will win it. तो नीदरलैंड वेल्स में तो तू नीदरलैंड कह रहा है.
क्यों नीदरलैंड क्यों? I think they have, I mean, I've watched their games and I feel that they're very explosive going forward. And they can, I mean, with the amount of chances that they create, and with Depay, I mean, that guy can give you goals. He can. And De Jong has been good. Gigi has been phenomenal. And I think it's one of their players. He's the left back. I don't know how to pronounce his name. Dumfries or Dumfries. He has also been very Dumfries, yeah. He's also been very good. Yeah. वो अभी यूरो के मतलब ड्रीम स्क्वाड में भी था डम्फ्रीज, मतलब जो एचटी ने निकाला था ऑफ कोर्स. Who's the right back? I'm forgetting the name. Who's the right back? ब्लाइंड की बात कर रहा? नहीं, he's a left back. He does not play as a Daley Blind does not play as a right back. I think the right back is नहीं, मेरे को भी नहीं पता लग रहा है. Wait, I have to check. Forgetting his name. हाँ, weird. Arke plays for them. Patrick Van Holt, he's also a left back actually, but he plays in the mid, I think. To check there, I think Netherlands played. Who did Netherlands play? अभी लास्ट मैच का देखते हैं. Netherlands played. They played Austria. No, they played Macedonia. Netherlands ने Australia. They played North Macedonia. They played North Macedonia. Let's look at their lineup. Yeah, Austria. North Macedonia, Austria. North Macedonia. 3-0 वाला. Left back is right back is Dumfries that you said. He's the right back, and Daley Blind plays as that. And Holt left. Patrick Van Holt is left, and Daley Blind actually plays as that as a right center back, so to speak, alongside that Juventus defender, former Ajax player. So yeah, I mean, Matthias de Ligt. Yeah, so they have enough. They made us good, certainly very good, with Wijnaldum serving as box to box. De Jong is again another player who's box to box. Achhi side, yaar. I mean, they have the potential. And I think, have they conceded any goal so far in the tournament? नहीं, I think so. 6-7 तो स्कोर करे, 6 तो स्कोर करे एटलीस्ट. हाँ. नीदरलैंड ने. Netherlands, अच्छा, हाँ. 6 तो स्कोर करे हैं. हाँ, they defeated. एक मिनट. Again, Australia also they scored. Ukraine was in the same group, na? हाँ. अरे हाँ, how can we miss that match? Ukraine played a wonderful game, man. 2-2 वाला ना? They were leading by 2-0. Ukraine scored twice. हाँ. Then Gigi scored again. वही 2-2 वाला मैच की बात कर रहे हैं ना? Yes. हाँ. I think we've covered all the matches then. हाँ, मेरे हिसाब से वही फ्रांस क्या बाकी था लास्ट में? इंग्लैंड जर्मनी और एक क्या बाकी था आगे का? I guess we have covered England Germany भी ना, है ना? We've covered. तो यही है basically. Let's see.
आज के मैच के प्रेडिक्शन दे रहे डेनमार्क एंड इटली. वेल्स इटली. What about you? वेल्स इटली. Let's see. देखते हैं. चलो देखते हैं. चलो ठीक है. So this was Gaurav Angtani and Devan Saxena signing off. Let's see. देखते हैं. Bye. चलो bye. Bye.